हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल को देखेंगे। वो किसके बेसिस पर रहेगा? हमारे फंक्शन के स्कोप के बेसिस पर। मतलब यदि कोई वेरिएबल फंक्शन के स्कोप में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यदि कोई आउटसाइड द स्कोप है हम उसको क्या बोलेंगे, और हम किस तरीके से इनको यूज करेंगे, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोप, बेसिस ऑफ, we have two types of variable. One is local variable, second one is global variable. Understand this, let me see the things practically. Suppose मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ. Suppose the function name is f1, and in this function I am taking one variable a is equal to 10 when I print a. At the same time I define one function f2 and again I print a. So you can see this when I run this code and call the f1. When I call f1, you are having the output as a 10 because a वेरिएबल जो है हमारा उसको वैल्यू 10 असाइन की गई है और उसको हम प्रिंट a कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास? 10 आ रहा है. Let I call the function f2. When I run this code, so you are getting the name error. What does it mean? Name a is not defined. इसका मतलब क्या है? a ऑलरेडी हम a is equal to 10 डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन हम जो a is equal to 10 को डिफाइन किया है वो हमने किस में करा है? फंक्शन f1 में. यदि हमने फंक्शन f1 में उसको डिफाइन किया है, इट मींस इस a का जो स्कोप है उस फंक्शन f1 के अंदर है. यदि मैं इसको किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस करना चाहूंगा एंड इफ आई ट्राई टू एक्सेस आउटसाइड द स्कोप ऑफ दैट फंक्शन, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस. और मुझे क्या एरर आने वाली है? नेम एरर. वो बोलेगा कि भाई ये जो आपका a जो वेरिएबल है ना, दैट इज नॉट डिफाइंड, है ना. तो वो वेरिएबल जो उस अंडर द स्कोप ऑफ फंक्शन डिफाइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल. नाउ इफ I take a variable e is equal to 20 here, and similarly I define the function f1, print a. Then I define function f2, again I print a. When I run this code and call f1, so the output is 20. Then I call f2, the output is again 20 because this variable is not defined under any scope. This is outside the scope of both the functions. मतलब ये वेरिएबल जो है हमारा वो हमें ग्लोबली अवेलेबल है ना. तो इस ग्लोबल वेरिएबल को दोनों ही फंक्शन एक्सेस कर पा रहे थे, इसीलिए कहीं पर भी आपको नेम एरर आइडेंटिफाई नहीं हुई एंड यू कुड बी एबल टू एक्सेस द ए प्रॉपर्ली. तो इस टाइप के वेरिएबल्स जो कहलाते हैं हमारे, वो कैसे कहलाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स. So this is what about the local variable and this is what about the global variable. Now we take one scenario here. Suppose you are having one variable that is having a is equal to suppose 555, and I am defining one function here. The function is suppose f1. Under this function, I am calling e is equal to suppose that is Rahul. I print a. At the same time, I define one function that is f2. Again, I call the print a. I run the function f1. When you run the function f1, can you see the output is Rahul? तो जब भी पाइथन वर्चुअल मशीन उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है और वो उसको बैक ट्रैक कर रही है कोड को, सो इट विल चेक फॉर द फर्स्ट लोकल वेरिएबल दैट इज a इज इक्वल टू राहुल. इट विल चेक फॉर फर्स्ट द लोकल वेरिएबल, देन इट विल चेक फॉर द ग्लोबल वेरिएबल. It will check for the local variable, then it will check for the ग्लोबल वेरिएबल. जब लोकली इसको मिल गया है a इज इक्वल टू राहुल, तो इसका आउटपुट आपके पास क्या आ गया है? राहुल. बट यदि सिमिलरली इफ आई वांट टू डू दिस विद f2
and run this code. So can you see the output that is 555? मतलब इसके पास लोकल ए नहीं मिला तो उसने किसको रेफर कर लिया? आपके ग्लोबल ए को रेफर कर लिया. बट सपोज लेट वी आर हैविंग अ डिफरेंट सिचुएशन हियर. हम एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10 डिफाइन करते हैं, दैट इज आवर ग्लोबल वेरिएबल, एंड वी डिफाइन वन फंक्शन f1. But what is my intended goal? I want to give the facility to this function that can change to the global variable. Fine. So what I will do, instead of declaring the local variable, I will be using the global keyword that will access the global variable value. And when I update, it's like Rahul. And when I print A, at the same time, I also define one function that is f2, and the goal of this function is only to print A. Now see the order here. Order is very much important. When I run this code and when I call the function 2, can you see the output is 10? That is a global variable A is equal to 10. Now see the scenario. When f1 is called first, when I run this code, can you see the output is Rahul? But now I called the f2. Can you see the output is Rahul? What does it mean? This function f1, whatever it is changing, that changes are not only reflected in the A inside the f1, but it is reflecting in the global variable also. So if you want to access the reference of that global variable inside your local scope, आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके उसको काम करना पड़ेगा. So this is what the use of global variable. Now here is one important situation. ये हमने देखा कि भाई ग्लोबल को किस तरीके से एक्सेस करके लोकल से अपडेट करा सकते हैं हम उसको और फिर यूटिलाइज कर सकते हैं ना. Here can be another case. Suppose I am defining one e is equal to 10 and I am defining one function f1 कि अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, सपोज a is equal to Rahul, and when I print a, definitely this function will be printing the local variable that is a. But what I want to access inside this local scope the local variable as well as the global variable. So what I need to do, I have to call one important function that is a globals. The globals function is there. In this global function, it will call all the data that is available in the memory, and from that, and the data will be available in the form of the dictionary only, and from that I am accessing the a variable. When I run this code and call for f1, so can you see this? The output is Rahul as well as 10. So what is the impact of this global? Let me see here. So when I call the globals, so can you see this output? In this, all the things that is available in the notebook, that is globally available in the notebook, that is available here. So and the things are in the form of the dictionary, you can see. तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे ग्लोबल स्कोप में हमारा जो ए वेरिएबल है जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो भी है ना. सो एंड दैट इज डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर सेल ओनली. तो उस ए को जो है हमने एक्सेस करा है, उस ए कीवर्ड के उसकी जो की थी उसको ए थी हमारी, और उस ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है हमारे पास दैट वाज योर 10 this. So the globals function is capable to access all the things that is globally available in your memory, that will return the corresponding value of that key. So in the same function, I am having the similar name of the local variable as well as the global variable, but I am able, with the help of, I am able to access the value of a that is globally available with the help of globals function. So that is what we have discussed about the local variable and global variable. हमने क्या कोशिश करी? लोकली डिफाइन करने की भी कोशिश करी, ग्लोबल वैल्यू भी करने की कोशिश करी. Even we have tried to update the global value with the help of local scope, as well as we could be able to access the same variable name that is available in the global as well as in the local scopes. So it's all from my side for this video. Thank you for watching.